welcome on my video. In previous lecture we discussed types of accounts. In previous lecture we seen mainly two types of account. First one is personal accounts and second one is impersonal account. But impersonal accounts again two subtype. First one is real account and second one is nominal accounts. Okay students, so generally we have three types of account. First one is personal account, second one is real account and third one is nominal accounts. Okay students, so today we are going on your new topic डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स ऑफ अकाउंट्स. मतलब जो हमारे अकाउंट्स है थ्री, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स, तो उसकी अब इफेक्ट क्या होगी. टू इफेक्ट होती है जनरली अंडर द ड्यूअल इफेक्ट सिस्टम. ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू इफेक्ट अंडरस्टूड. जो हमारी सिस्टम है अकाउंट्स प्रिपेयर करने की ड्यूअल इफेक्ट सिस्टम, तो उसके अंडर में हमें क्या होता है कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट. मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन की क्या होती है, टू इफेक्ट होती है. फर्स्ट वन इज डेबिट. फर्स्ट इफेक्ट मीन्स डेबिट इफेक्ट एंड सेकंड इफेक्ट मीन्स क्रेडिट इफेक्ट. मीन्स कोई भी ट्रांजेक्शन होगा बिजनेस का उसकी टू इफेक्ट होती है. फर्स्ट डेबिट इफेक्ट एंड सेकंड वन इज क्रेडिट इफेक्ट. तो फर्स्ट नाउ वी सी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ अकाउंट्स. सो अब हम लोग देखेंगे रूल्स. सो पहले हम लोग पर्सनल अकाउंट्स के रूल्स देखते हैं. तो फॉर द पर्सनल अकाउंट्स डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. मीन्स पर्सनल अकाउंट्स में हम लोग को पता है किस टाइप के अकाउंट्स इंक्लूड होते हैं. सो लाइक पर्सन और लीगल आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट्स इज आर इंक्लूडेड इन अवर पर्सनल अकाउंट्स. सो उसका रूल्स क्या है, डेबिट द रिसीवर. मीन्स कोई भी पर्सन या कोई भी कंपनी हमारे बिजनेस में से कुछ भी रिसीव करते हैं, एनीथिंग इज रिसीव फ्रॉम आवर बिजनेस, सो हिज अकाउंट्स इज डेबिटेड. अंडरस्टूड. मतलब हमारे बिजनेस में कुछ भी कोई पर्सन या कंपनी कुछ लिया है, कुछ रिसीव किया है, तो उसका अकाउंट्स क्या होगा, डेबिट होगा. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. एंड नाउ वी सी क्रेडिट. सो क्रेडिट द गिवर. मीन्स कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन हमारे बिजनेस में कुछ देता है. अंडरस्टूड. कोई भी चीज या गुड्स या असेट्स कुछ भी प्रोवाइड करता है, तो वो पर्सन और कंपनी क्या हुई, गिवर हुए. सो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स एनीथिंग इज गिवन, सो हिज अकाउंट इज क्रेडिट. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. सो नाउ वी सी व्हाट इज द रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स. टू डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. मीन्स कोई भी पर्सन है, कोई भी कंपनी बिजनेस में से कुछ रिसीव करता है तो उसका अकाउंट डेबिट होगा, और कुछ भी प्रोवाइड करता है हमारे बिजनेस में से तो उसका अकाउंट क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट होता है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. गुड. देन सेकंड वन इज रियल अकाउंट्स. So what is the rules for real accounts? So real accounts debit what comes in. Means हमारे business में से कुछ भी आ रहा है, what comes in our business, so its accounts is debit. Means कोई भी goods या assets कुछ भी anything हमारे business में आ रहा है comes in our business, so its accounts is debit. And credit what goes out. मतलब हमारे business में कुछ भी जा रहा है, anything is goes out from our business, so its accounts is credit. Understood students. So according to rules of debit credit for the real accounts, debit what comes in. मतलब कुछ भी आता है हमारे बिजनेस में गुड्स या असेट्स, तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा. एंड कुछ भी जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एनीथिंग गोज आउट फ्रॉम आवर बिजनेस, सो इट्स अकाउंट इज क्रेडिट. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. Good. Then third accounts is nominal accounts. So for the nominal accounts, rules of debit credit is डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉस. मीन्स हमारे बिजनेस का कुछ भी एक्सपेंस है या कुछ भी लॉस है, वॉट एवर, वो क्या होगा, ऑलवेज डेबिट होगा. ओके स्टूडेंट्स. एंड क्रेडिट इनकम्स एंड प्रॉफिट. मीन्स हमारे बिजनेस की कोई भी इनकम या कुछ भी प्रॉफिट, वो क्या होगा, ऑलवेज क्रेडिट होगा अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. तो हमने देख लिया कि रूल्स क्या है. वी हैव थ्री अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स. सो फर्स्ट पर्सनल अकाउंट्स के लिए क्या रूल्स है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. फॉर सेकंड अकाउंट्स रियल अकाउंट्स, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज out. Understood. And third and last accounts is nominal accounts, so debit expenses and loss, credit incomes and profit. Okay students, so I hope you all are understood. Please note down this format in your notebook and let me start example. Okay. So let me understood by example. So first example is goods sold worth rupees 20,000 sold to Radha. So in this transaction अब क्या कर रहे हैं हम लोग, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं. किसको कर रहे हैं हम लोग, राधा को. मीन्स हमने जो गुड्स सोल्ड किया उसका रिसीवर कौन है,
Radha is a receiver of our goods. So in this transaction, Radha is a receiver and Radha is a live person. So its account, his accounts is included in personal accounts. So according to rules of personal accounts, डेबिट द रिसीवर मीन्स यहाँ पे राधा ने क्या किया है, जो गुड्स हमने सोल्ड किया वो गुड्स राधा ने रिसीव किया है, मीन्स राधा इज द रिसीवर. सो इन दिस ट्रांजेक्शंस राधा's accounts is debit. Understood students? Radha's account debit. Okay students, then let me see second example. Rupees 10,000 deposited with Bank of Baroda. So in this transaction Bank of Baroda is the receiver. Understood? अब हमने क्या किया कि रुपीज 10,000 था वो हमने बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा में जाके डिपॉजिट किया. अंडरस्टूड? जो हमने डिपॉजिट किया तो वो जो मनी हमने डिपॉजिट किया वो किसने रिसीव किया, वो इज द रिसीवर दिस मनी. सो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या है, रिसीवर है. एंड बैंक ऑफ बड़ौदा इज ऑल्सो लीगल आर्टिफिशियल पर्सन. सो its accounts is included in personal accounts. So according to rules of personal accounts, debit the receiver. So यहाँ पे भी क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, उन्होंने क्या किया है, कैश रिसीव किया है. जो हमने डिपॉजिट किया मनी वही मनी किसने रिसीव किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा. तो इन दिस ट्रांजेक्शंस बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट ऑल्सो डेबिट. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Okay, so let me see next. Rupees 30,000 paid to Bhumika. Okay, so यहाँ पे क्या है, रुपीज 30,000 हमने पेड किया है भूमिका को. तो भूमिका क्या है, वन रिसीवर. जो हमने पेड किया किसको किया, भूमिका को. तो इन दिस ट्रांजेक्शन भूमिका इज रिसीवर. सो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स डेबिट द रिसीवर. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो इन दिस ट्रांजेक्शन अगेन Bhumika is live person, so Bhumika's account is debit. Bhumika's account debit. Then fourth number, rent payable to Shilpa rupees 2,000. So in this transaction अब हमें क्या करना है, रेंट पे करना है. किसको करना है, शिल्पा को करना है. रेंट पेबल टू शिल्पा. सो इन दिस ट्रांजेक्शन शिल्पा अगेन रिसीवर. सो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स डेबिट द रिसीवर मीन्स इन दिस ट्रांजेक्शन अगेन शिल्पा's अकाउंट डेबिट. ओके स्टूडेंट्स? Then last transaction, goods of rupees 5,000 purchased from जयश्री. यहाँ पे क्या है कि जो गुड्स है 5,000 रुपीज का हमने परचेस किया, वो किसके पास से परचेस किया है, जयश्री के पास से. सो इन दिस ट्रांजेक्शन जयश्री इज द गिवर. अंडरस्टूड? यहाँ पे हमें परचेस कर रहे गुड्स पर किसके पास से कर रहे हैं, जयश्री के पास से. तो जयश्री इज द गिवर ऑफ दिस गुड्स. अंडरस्टूड? हमें गुड्स वो दे रही है. सो according to rules of personal accounts, Jayashree accounts is credit. Understood students? Jayashree's account credit. Okay, so let we understood. ये जो एग्जाम्पल थे हमने उसके थ्रू हमने देख लिया कि किसके अकाउंट्स डेबिट होते हैं और किसके अकाउंट्स क्रेडिट होते हैं. अंडरस्टूड? सो यहाँ पे राधा थी, वो क्या थे, रिसीवर. सो रिसीवर अकाउंट्स डेबिट. सो राधा's अकाउंट डेबिट. इन दिस ट्रांजेक्शन अगेन बैंक ऑफ बड़ौदा इज द रिसीवर ऑफ कैश. सो डेबिट द रिसीवर. सो अगेन BOB's अकाउंट इज डेबिट. देन थर्ड नंबर, भूमिका इज रिसीवर द कैश. सो अगेन भूमिका's अकाउंट इज डेबिट. देन फोर्थ नंबर, शिल्पा इज द रिसीवर ऑफ द रेंट. सो Shilpa's account debit. And in last transactions Jayashree is giver because in this transaction goods of rupees 5,000 purchase, मतलब हमने goods purchase किया है, किसके पास से किया है, जयश्री के पास से. So in this transaction Jayashree is the giver of the goods. So Jayashree's account credit. Understood students? So let me see next topic, रियल अकाउंट्स. अब हम लोग क्या करेंगे, रियल अकाउंट्स के एग्जाम्पल देखेंगे. जैसे हमने पर्सनल अकाउंट्स के देखे वैसे हम लोग क्या करेंगे, रियल अकाउंट्स के अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे. ओके स्टूडेंट?
So first transaction of real accounts is goods of rupees 20,000 purchased from Rohini. So in this transaction, first of all, goods comes. So goods related transactions is included in real accounts. Okay. Then goods of rupees 20,000 purchase, मतलब goods जो 20,000 का था वो हमने क्या किया, परचेज किया है. Means goods comes in our business. So according to rules of real accounts, debit what comes in. मतलब कुछ भी हमारे बिजनेस में आता है. Understood? What comes in our business, so its accounts is debit. So in this transaction, goods purchase means goods comes in our business. So purchase account debit. Understood, students? Purchase account debit. Okay. Then second one is goods of rupees 5,000 sold to Mohit. Means in this transaction again goods. So this transaction is included in real accounts. Then goods of rupees 5,000 sold to Mohit. Means यहाँ पे क्या किया है हमने, goods को sold किया है मोहित को. So in this transaction goods goes out from our business. हमारे business में goods क्या हो रहा है, जा रहा है. Understood? हमने sold कर दिया मोहित को. So according to rules of real accounts, credit what goes out. मतलब कुछ भी हमारे business से जाता है तो उसका अकाउंट क्या होता है, always credit होता है. So in this transaction goods of rupees 5,000 sold to Mohit. So sales account credit. Understood, students? Then third one is machine of rupees 10,000 purchased from Sonu. Means यहाँ पे क्या, in this transaction first of all machine is the assets of our business. Understood, students? So assets is also included in real accounts. Okay. And machine हमने क्या किया, purchase किया है. Means machines comes in our business. machine हमारे business में आ रहा है. So according to rules of real accounts, debit what comes in. मतलब कुछ भी हमारे बिजनेस में आता है तो उसका अकाउंट क्या होता है, डेबिट. सो यहाँ पे मशीन हमारे बिजनेस में आ रहा है क्योंकि हमने मशीन क्या किया, परचेज किया है. सो इन दिस ट्रांजेक्शन मशीन अकाउंट इज डेबिट. अंडरस्टूड, स्टूडेंट्स? Then last one is old furniture of rupees 15,000 sold on cash. So in this transaction, first of all, old furniture is the assets of our business. So its accounts is included in real accounts. Okay. Then old furniture of rupees 15,000 sold on cash. मतलब हमने क्या किया है, सोल्ड किया है. जो फर्नीचर था हमारे बिजनेस का वो ओल्ड हो चुका है और उसको हमने क्या किया, सेल किया है, सोल्ड कर दिया है. So in this transaction furniture is goes out from our business. So according to rules of real accounts, credit what goes out. Means यहाँ पे furniture हमारे business में से जा रहा है तो furniture account is credit. Understood, students? So here old furniture account credit. Okay, students. So I hope you all are understood how to identify debit and credit. Okay, students. So let me start your third accounts, nominal accounts. अब उसको भी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इंडिविजुअली एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं. Okay, students. So let me see examples of nominal accounts. So first example, rupees 5,000 paid for salary. So in this transaction हमने क्या किया कि 5,000 rupees salary के लिए paid किया है. So according to rules of nominal accounts, in our business incurred expense related to salary. Understood? So salary के related हमारे business में क्या हुआ, one type of expense. So in these transactions salary account is debited. Salary account debit. Understood, students? Because according to rules of nominal accounts, debit expenses or loss and credit incomes and profit. Means salary क्या है हमारे लिए, expense. So salary account is debit. Understood, students? Then second example, rupees 3,000 paid for rent. So in this transaction again we incurred expense
सो यहाँ पे क्या हुआ, रेंट हमने पेड किया, मीन्स हमारे बिजनेस में अगेन एक्सपेंस हुआ, सो रेंट अकाउंट इज ऑल्सो डेबिटेड। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Then third one is bad debts incurred for rupees 1000. So in this transaction, bad debts incurred, and bad debts is one type of loss of our business, and according to rules of nominal accounts, debit, expenses and loss. So यहाँ पे क्या है, bad debts incurred means हमारे बिजनेस में क्या हुआ, लॉस हुआ, so again bad debts account is also debited. ओके स्टूडेंट्स, देखो फर्स्ट में सैलरी, सेकंड में रेंट, थर्ड में बैड डेट्स, फोर्थ इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज 22,000। अब यहाँ पे क्या किया हमने, इंटरेस्ट रिसीव किया है। इंटरेस्ट मीन्स हमारी कहीं पे डिपॉजिट है और वहाँ से हमें क्या मिलता है, एवरी ईयर या एवरी मंथ हमें कुछ मनी रिसीव होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इट्स नोन एज अवर इंटरेस्ट। एंड इंटरेस्ट रिसीव रुपीज 22,000 एंड इंटरेस्ट इज one type of our income. So according to rules of nominal accounts, credit, incomes and profit, तो यहाँ पे interest क्या है हमारे लिए, income हुआ। Understood students? So in this transaction, interest account credit, interest account credit. Understood students? Then last one is paid telephone bill rupees 500. पेड टेलीफोन बिल रुपीज 500 मीन्स यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक्सपेंस इनकर हुआ। अंडरस्टूड स्टूडेंट? एक्सपेंस हुआ, सो अगेन टेलीफोन बिल इज एक्सपेंस, सो टेलीफोन बिल अकाउंट, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट, सॉरी। Okay students, so I hope you all are understood rules of debit credit of accounts. Okay students, so in next lecture अब हम लोग क्या करेंगे कि यही रूल्स हैं, ये हमने आज इंडिविजुअली मैंने एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, तीनों अकाउंट्स के रूल्स हम लोग मिक्स में, मैं आपको ट्रांजेक्शंस दूंगा और उसको आपको सॉल्व करना है। डेबिट और क्रेडिट बोथ इफेक्ट आपको देनी है। यहाँ पे हमने क्या किया, ओनली वन इफेक्ट दिए, बट नेक्स्ट लेक्चर अब हम लोग क्या करेंगे कि एक ही ट्रांजेक्शन की दोनों इफेक्ट देंगे। Understood students? So I hope you all are understood and please note down this table in your notebook. Thank you.